Good afternoon, class 8. How are you all? We hope you all will be doing good in your home and welcome back to our class. So, students, in last class we have discussed up to page number 213, topic charging by induction. Okay, methods of charging we have discussed. Three methods are there: friction, conduction, induction. ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे. Now we are going to discuss from the same page 213 ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. सो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द गोल्ड-लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, तो क्या होता है ये गोल्ड-लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? लेट्स डिस्कस अबाउट इट. एन इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड इट्स नेचर ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज और उसके नेचर को डिटेक्ट करने के लिए हम ये इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं, दिस गोल्ड-लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. So it was first electrical charge detecting instrument. Electroscope is the first electrical instrument which used to detect the electrical charge. ठीक है, first electrical charge was invented by the British physician which is known as William Gilbert, and it is very sensitive and delicate instrument. अब ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोचार्ज कैसे बना हुआ है देखो. फर्स्ट इट इज हैज़ द ब्रास डिस्क ऊपर में उसके. देन ऑन द ओपनिंग रबर स्टॉपर इज देयर. It is made up of glass jar with the brass disc. Brass rod is connected, and in the both the side metal foil is present on the glass jar, and a gold leaf is present which is connected to the which is joined to the brass rod. Okay, and interior of the glass jar is surrounded by the metal foil. When the electroscope is used, the metal foil is earthened. This increases the sensitivity of the electroscope. Some electroscope have strips लीव्स ऑफ सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और ब्रास इंस्टेड ऑफ गोल्ड. अब ये इसमें अर्थिंग का प्रोसेस भी किया होता है. और इन प्लेस ऑफ गोल्ड लीव्स इन सम इलेक्ट्रोस्कोप द सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम और ब्रास लीव्स वेयर यूज इंस्टेड ऑफ गोल्ड. ओके, सो दिस इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड हाउ इट इज मेड अप ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो देयर. So understand this transfer of charge. Here one activity is given in your book. So what we have to do and what things are need for this activity are given here. So first thing is gold leaf electroscope, a glass rod and a piece of silk cloth. So what we have to do in this, first we have to rub the glass rod with the silk cloth to get it positively charged, because we have just discussed in the last class that silk cloth, when we rub the glass rod in the silk cloth, it will be positively charged, and when we rub the glass rod in the woolen cloth, it is negatively charged. Okay, now the second step, take a gold leaf electroscope in which the leaves of the electroscope is initially folded. इलेक्ट्रोस्कोप लेके आना है और जो लीफ है वो इनिशियली फोल्डेड होना चाहिए. जो गोल्ड लीफ है वो फोल्ड होना चाहिए पूरा. ब्रिंग द चार्ज ग्लास रॉड इन द कॉन्टेक्ट विद द ब्रास डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप. जो ब्रास डिस्क के ऊपर में उसके कॉन्टेक्ट में लेके आना है ग्लास रॉड को. ठीक है, what will happen on touching the charged glass rod with the brass disc, the gold leaves diverge. वो गोल्ड लीफ क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा. फोल्डेड है वो डाइवर्ज हो जाएगा. क्यों? When the charged glass rod touches the brass disc receive the charges. अब वो क्या रिसीव करेगा, क्योंकि वो अनचार्ज है. जैसे ही हम इसको पढ़े हैं पहले भी कि हम किसी अनचार्ज पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल के पास लेके आएंगे तो सेम चार्जेस वो अपने में ले लेता है. तो सिंपल यहाँ भी वही होगा. जो थ्रू दिस ग्लास ब्रास डिस्क और ब्रास रॉड द लीफ डाइवर्जेस, वो अपने में चार्ज ले लेगा. चार्ज होने के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगा. दिस फ्लो ऑफ चार्जेस अलॉन्ग द ब्रास रॉड टू द गोल्ड लीव्स. You know that metals are good conductor of electricity. The gold leaves carrying similar charges repel each other and before becoming wide open. ठीक है, गोल्ड लीव्स के पास भी सिमिलर चार्जेस हो जाएंगे. सो वो क्या करेंगे, उनका माउथ क्या हो जाएगा. मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी ऑल नो दैट, एंड देयर माउथ विल ओपन एंड दे बिकम डाइवर्ज. ठीक है, वो डाइवर्ट हो जाएंगे. पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है. दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए. पॉजिटिव होने के बाद वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे से. एज वी ऑल नो दैट द सेम चार्जेस रिपल ईच अदर. इबोनाइट रॉड में ही सेम टू सेम फंक्शन होगा. व्हेन वी टेक द इबोनाइट रॉड इन प्लेस ऑफ ग्लास रॉड एंड रब इट विद द वुलन क्लॉथ and they acquire the negative charge, we will touch the brass disc, then the gold leaf diverge by the same charges repel each other.
सेम थिंग होगा. सो कंक्लूजन, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट थ्रू अ मेटल कंडक्टर. दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द topic. Now what is earthing? Take an electroscope, charge the electroscope by touching it brass disc by the glass rod rubbed with the silk cloth. You will see the leaves where electroscope were diverged as we discussed in the activity. Okay, now touch the end of the brass disc gently with the hand. अब ब्रास डिस्क के एंड को हैंड से टच करो. फर्स्ट हम ये किए, एक्टिविटी परफॉर्म हो गया. अब उसको हम लोग एंड से टच कर रहे हैं. सो what you will observe that the leaves of electroscope come back to its original position. फिर वो क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे जैसे वो फोल्डेड थे. So repeat the charging of electroscope and touching the brass discs again. Every time you will found that the electroscope collapse fold when you touch the brass disc on the electroscope. This is the reason why that the gold leaves lose charges to the earth through your body. We can say that the electroscope's leaves are discharged. The process of transferring of charge from a charged object to the earth is called earthing. ठीक है, पहले क्या कर रहे थे, रॉड लेकर आ रहे थे, उसमें चार्ज आ रहा था, वो डाइवर्ज हो जा रहे थे. बट जैसे ही तुम अपने हैंड से उसको टच कर रहे थे तो वो कोलैप्स हो जा रहे थे, वो फोल्ड हो जा रहे थे. सो इससे हमको क्या पता चलता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट. अर्थिंग क्या हुआ, चार्ज ऑब्जेक्ट से ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ. चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज को ट्रांसफर करना अर्थ में, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी एज अर्थिंग. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थिंग. चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज को ट्रांसफर करना किसमें, अर्थ में. सो दिस प्रोसेस इज सेड टू बी एज अर्थिंग. ठीक है, ये अर्थिंग को रिप्रेजेंट करता है. ओके, नाउ यूजेस ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. अब गोल्ड लीफ का इलेक्ट्रोस्कोप का यूज क्या क्या है. डिटेक्शन ऑफ चार्ज. First, the gold leaf is used for the detection of charge. What is this? Gold leaf electroscope is used to detect charge of an object. Take a conductor which does not be tested for the presence of charge. Touch it with the brass cap of gold leaf as shown in the figure. So what will happen? जब ऑब्जेक्ट को टेस्ट करना है कि वो चार्ज है कि नहीं, so कोई इफेक्ट नहीं होगा लीफ में. ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट चार्ज है, नेचर उसका टेस्ट करना है. हाउ वी विल चेक द नेचर ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट. जैसे अगर वो अनचार्ज है, उसको तुम टच करवा रहे हो, तो इससे हमको पता चलेगा उस ऑब्जेक्ट में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं, बिकॉज लीव्स में कोई भी डाइवर्जन नहीं हुआ. लीव्स जैसे था वैसे ही ये गोल्ड लीफ. लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट चार्ज है, अगर उसको तुम ग्लास रॉड पे टच कर रहे हो, ब्रास रॉड पे, और वो लीफ उसका नेचर चेंज हो गया, इट मीन्स वो डाइवर्ज हो गया. इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड. ठीक है, नाउ सेकेंड केस, to identify the nature of the object. The charge an electroscope by touching its disc with a charged glass rod. The leaf shows the divergence. Now touch the brass disc of the charged electroscope with the object to be tested. If the divergence of the leaf further increases, the object is positively charged. Obvious सी बात है, जैसे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को ब्रास डिस्क पे रखेंगे तो वो डाइवर्जेंस शो करेगा. ठीक है, सो इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज. ग्लास रॉड लेकर आओगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इवेनॉइड रॉड लेकर आओगे तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा. सो दिस हाउ वी विल यूज द इलेक्ट्रोस्कोप. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज गिवन इन योर बुक. कंप्लीटेड एवरीवन. फर्स्ट, चार्जेस आर ऑफ two types, positive and negative. Second, the electric charge on a glass rod when it rubbed with the silk cloth is positive, और एबोनाइट रॉड में होगा, वुलन क्लॉथ में अगर उसको कनेक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव होगा. ठीक है, क्लियर हो गया. नाउ द थर्ड वन, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर. फोर्थ वन, चार्ज ग्लास रॉड एंड एबोनाइट रॉड अट्रैक्ट ईच अदर. ओके. फिफ्थ वन, टाइप्स ऑफ चार्जेस वेयर डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. कौन उसको डिस्कवर्ड किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. ओके ओके. नाउ flow of charge electric current. As we all know that flow of charge electric current takes place. Most of the particles, appliances of electricity involve a flow of charge from one point to the another point, and it means positive to the negative terminal. The flow of charge is described in a term of electric current. When we know that water flows from the higher to the lower level is irrespective of the quantity of the water contained in two container. एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब तक कंटेनर फुल नहीं हो जाता वाटर फ्लो करता रहता है.
So similarly, when a charged object is connected to the uncharged object through a conductor, the electric current flow until the two objects are equally charged. वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट तब तक रहते हैं जब तक दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इक्वली चार्ज नहीं हो जाते. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, this is called as flow of electric current. To make electric current move continuously a wire, you need an electric cell or a generator. हमको पता है इलेक्ट्रिक फ्लो करवाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए हमको या तो वायर की ज़रूरत पड़ती है, जनरेटर की, स्विच, मोस्ट so many things were required to flow the electric current. Okay students, so this topic, flow of electric current, about electricity, everything is completed. Now we are going to discuss another topic of the same chapter, the story of lightning and thunder. Before starting the topic, I would like to show one video related to the story of lightning and thunder. So many things were covered in this video, so please listen the video carefully, see the video carefully, then we will start the class. A flash of lightning and a rumble of thunder. But what exactly are these spectacular occurrences? In 1752, Benjamin Franklin discovered that lightning was caused by powerful electrical discharges in clouds. He wasn't the first person to discover electricity, or the first to think that lightning was made of it. But he did prove it to be the case by flying a kite during a thunderstorm. Luckily, his kite wasn't actually struck by lightning, because it would have fried him in his boots. Thunderstorms are caused by small electrically charged particles. As water molecules in the cloud are heated and cooled, they move up and down against each other. There is a separation of charge, forming two poles within the cloud. One part becomes negatively charged, and the other part becomes positively charged. Objects on the ground then become oppositely charged to the lower part of the cloud. This imbalance tries to resolve itself by passing current between the differently charged poles. Charged particles always flow in the direction where there are less particles of the same charge. This results in a lightning bolt. Sometimes the bolt will carry a positive charge and sometimes a negative charge. At first, there is a bolt which is invisible to our eyes. When the invisible lightning bolt gets close enough to the ground, there is a powerful discharge of energy. So powerful, in fact, that it results in an electrical arc. And this is the lightning bolt that we see. The electrical arc of the lightning bolt heats the surrounding air to extreme temperatures. In fact, the air around can be heated to 5 times hotter than the sun. This heat causes the surrounding air to rapidly expand and vibrate, which is the rumbling thunder that we hear. So lightning can come in many different colours, and the colour depends on atmospheric humidity, temperature, and levels of air pollution. Lightning also transports massive amounts of energy, 5 times hotter than the sun, so that makes sense. Each bolt carries about 10 billion watts. That's enough power for 32 million people a year. 10 billion watts per bolt, and given that 50 bolts strike the Earth's surface every single second, means the power of lightning is extraordinary and dangerous. Over 2,000 people a year are killed by lightning. So extracting electricity from lightning sounds like a good idea, right? Well, in reality, predicting where the lightning is going to hit to have our equipment is nearly impossible. We'd need to develop technology that can conduct and store this amount of instantaneous power. The equipment has been predicted to cost over $90 trillion US, which is actually all the money in the world. And we don't know if the lightning bolt is going to be positively or negatively charged, and so our equipment would need to cover both possibilities. However, scientists are
are still trying to see if they can harness lightning electricity. Why not? You might as well try. So, we've seen that lightning is an electrical discharge caused by imbalance between storm clouds and the ground. Thunder is then the heating and vibrations of the surrounding air particles. Given how powerful and common lightning is, our cars, houses and aeroplanes are protected from lightning. The metal frames and rubber tires of cars harmlessly carry the charge to the ground, and houses and buildings have conducting rods to do the same. And lightning bolts travel across the aeroplane's metal shell and leaves without the passengers barely noticing it's happened. The story of lightning. Hope you will all like the video and understand the video. So students, the story of lightning. In 1752, in a dark June afternoon in Philadelphia, USA, the 46-year-old Benjamin Franklin, an American scientist, decided to fly a kite. With the help of his son, William, he attached his kite to a silk string, tying an iron key at the other end. Next, they tied a thin metal wire to the key and inserted the wire into a leaden jar, a container for storing an electric charge. Finally, as the sky darkened and the thunderstorm approached, they attached a silk ribbon to the key, holding on to the kite by silk ribbon. Benjamin flew the kite, and once it was aloft, he went into a barn so that he would not get wet. When a storm cloud passed over Franklin's kite, the negative charge in the cloud leaked onto his kite string, his key, and the leaden jar attached to the key by a thin metal wire. Franklin, however, was unaffected by the electric charge because he was holding a dry silk string which insulated him from the charge on the key. When Franklin touched the key, he received a shock because the negative charge in the key were so strongly attracted to the positive charge in his body that a spark jumped from the sky to his hand. Franklin experimented successfully that lightning was actually static electricity. Franklin realized that this form of electricity would be charged over a conductor and passed onto the ground. He invented the lightning rod and the lightning conductor, providing the lightning and the alternative path to the अर्थ. अब उन्होंने बहुत सारे एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है. सो मैनी थिंग्स वेयर यूज्ड. एट लास्ट ही कंक्लूडेड दैट जो क्लाउड में जो थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग आती है, दे वेर चार्ज्ड, वेदर दे पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, और उससे कनेक्ट करके हम कोई चार्ज को रखते हैं तो दे विल अट्रैक्ट विथ ईच अदर, उनके नेगेटिव चार्ज को, और वो जो लाइटनिंग है उससे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, अर्थ पे आएगा. एंड he used so many things like leaden jar, a kite string, key, so many things. पहले वो क्या किया, अपने आप को एक इंसुलेटर से, सिल्क जो होता है इंसुलेटर, सिल्क वायर से इंसुलेटर से कनेक्ट करके रखे थे जिससे उनको शॉक नहीं लगता. देन ही यूज टू टच द की, जो की वो यूज़ किए थे मेटल का, उसको उन्होंने टच किया, ही विल रियलाइज द शॉक. सो उनको पता चला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो लाइट और थंडरस्टॉर्म आते हैं स्काई में, दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिसके वजह से उन्होंने उस लाइट को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. ही यूज टू रियलाइज दैट द lightning and the thunderstorm connect the charges. Okay, so ठीक है, and passes on to the ground. He invented, later after he invented the lightning rod and the lightning conductor, providing the lightning and alternate path to the earth. ठीक है, lightning conductor दिए एक alternate path to the earth. With the help of his son, he discovered the things. Okay, up to this we have completed. In the next class we will discuss about lightning and the thunder. ठीक है, lightning and thunder से हम discuss करेंगे students. So I am telling you again, after the completion of video, just go through the chapter, read it once again. In the next class we will discuss the lightning and the thunder. Till then, take care of yourself. Thank you so much class.